हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सरी कक्षा। तो आज हम अपनी कक्षा में ह्यूमन राइट डे से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करेंगे और अपने बच्चों को ह्यूमन राइट्स डे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो हम एंड इट्स अ इंटरनेशनल डे। ह्यूमन राइट डे इज अ इंटरनेशनल डे एंड दिस इज द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर ह्यूमन राइट्स डे। तो ह्यूमन राइट डे बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन 10th of December every year, and in this we have to tell our kids that we have the freedom for education, we have the freedom of talent to showcase our talent, we have the freedom to express, हमें express करने की भी freedom होती है। तो these all are the things that for the human rights day we have to know कि हमारे क्या rights हैं। तो let's do the activity for human rights day. For that we have required some material, that is A4 size sheet, your sketch color, pencil and the crayons, your color crayons. So let's start with the activity. For Human Right Day, you can use the pre-writing concept and how the child can make it. कैसे बच्चे बना सकते हैं with the pre-writing concept? Let's do it. First, they are going to make a hump. They are going to make a hump. Then they have to make a standing line. They have to make a standing line. Then a one sleeping line. Just do it. I'm repeating again. First make a hump. Then the child will make the standing line. One sleeping line, then two more slanting line. I'm waiting, just make it with me only. Make a sleeping line. This is your sleeping line, make it sleeping line. Here also make a two slanting line, a sleeping line and a swing. And a swing. So like this they can draw and color it. It is very easy for kids to make it with the pre-writing concept. ये एक्टिविटी अच्छी लगी हो बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग विद द प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक्टिविटी अच्छी लगी हो तो नर्सरी कक्षा को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।